So yesterday's class we started with motion in a central force, motion in a central field. Okay. So what before we are going to start, let me first rehash what we did yesterday. So yesterday we had for a motion in a spherical motion in a central field. You took recourse to polar coordinates. For example, when we study angular momentum or when we study rotational motion, so we take recourse to r, theta, phi. One is the radial velocity, which normally moves. The particle will move straight. But if particle moves around some field which is originating at some center, the field may be due to gravitation, it may be due to due to charge, or any field we are interested in. That they have the analogy is similar as if we are studying motion in a central field. Got the point? So हमने कल किया था, we just first defined the Lagrangian of a particle, Lagrangian of a system क्या है in terms of r, theta and phi. And at the end, if you remember the total energy of the system or total Lagrangian of the system, which was mr dot square, r square, phi dot square plus ur, or which we wrote like this, mr dot square plus, तो हमने इस r phi square की, if you remember, we can also write angular momentum as mr square phi dot, है ना? Angular momentum is equal to mv v is equal to r omega, that's mr square omega, that's mr square phi dot, and this phi dot we substituted here. The equation took the form like this. And further, so here we are interested in, here we got the differential equation. This is r dot. R dot means dr by dt. So how the particle moves in vis-a-vis time. If we solve this differential equation, the equation yesterday we took the form of equation was like this, dr by dt. आप अपनी जगह भी कर सकते हैं. You can just do it on your own. ur minus m square by mr square. Now from this we got two interesting equations which we have to study. So if you just इसको आप flip करेंगे, we flip it, dr by dt, इसको करेंगे dt by dr. This will go to the denominator, and dt जो right hand side में है, it will integrate from 0 to t. So the form of this t will come out to be, dr will be on that side. So the integral, since हमने इसको flipped it upside down, so ये denominator में आएगा. So it will come out to be ur minus m square plus m square r square plus this constant of integration, है ना? These constant of integration was just initial conditions of our differential equation. If the body started, for example, from rest, it's equal to 0. But since we are interested in rotational motion, so इसकी constant of integration you have to see what is that. So in the same way, तो t के form में हमने integration किया. In the same way, we can, if you want to solve this integral in terms of d phi, so it is m is equal to m by mr square in d phi by dt, or d phi is equal to m dt by mr square. So you can substitute it here and do the similar procedure. The way we got t, we can again get phi. And the phi, if you substitute the form of d phi in terms of m dt by mr square,
and integrating 5 जिस तरह हमने किया यहाँ पे 0 to t, so we can do the same procedure here and we get an equation in the form come on plus constant. So if I just follow the book, the equation 6, 14.6 and 7. So equation 6 and 7 become interesting for us. They become, because we are solving two differential equations for motion of a particle in a central field. In first case we have time parameter, the second case phi. This is the angle, because in central field the motion is not radial, it's along phi. Phi is changing continuously. At every point the particle moves, changes its angle vis-a-vis like this. If you remember, like this. If it's curve, ये delta phi है. This is R. This is origin. ठीक है, यहाँ तक that's fine. Now हमारे पास what you are going to see, this is the kinetic energy, this is the potential energy. Normally here you can see the potential energy is only UR, but here we have an additional term. Yesterday we said that this additional term is centrifugal term. So we just इस दो terms को we club it in terms of potential, and that is known as effective potential. This term does not allow the particle when it moves around, तो ये इसको otherwise जो center में force होगा ना, it will coalesce it towards center. But जो centrifugal term है, it will, एक हो गया centrifugal, it goes that way. So you can see it, the term is like that. So this term, this equation, this potential energy, we write it as U effective, can be written as UR plus m square by 2m R square. That's equivalent to E. Or UR plus m square 2m R square plus is equivalent to E. Now, since we say R is the radial velocity, but the particle is not moving radially, it's moving along. So dr by dt, what will be dr by dt? It will come out to be 0, है ना? क्योंकि particle straight नहीं move कर रहा है ना, it's moving like this in the centrally. So the radial velocity at given point will be the change of radial velocity dr will r dot dr by dt will be 0. But at every moment there might be some turning point. There might be some, the particle is moving like this. So its velocity can go from 0 to maximum, then again 0, then maximum. From minimum to maximum, अगर हम सर्कल की तरह लेंगे ऐसे, which corresponds to our previous class. हमने oscillation of the particle in a plane कैसे लिया था, maximum to minimum and minimum to maximum, and those are known as the turning points. Those are known as the turning points where the value of it can be minimum or it can turn out to be maximum. Radial velocity तो हमको पता है, it will come out to be 0. So at some point where our normal radius होगा, is r is greater than r minimum, the motion is infinite. I'll explain it. What does it mean from figure? तो अगर r में, so इसमें particle के दो radius होंगे. For example, a particle is moving. For example, it will come from infinity. आप देखो इसको. The particle ये यहाँ से start हुआ ना, एक रेडियस बनाएगा, दूसरा रेडियस बनाएगा, तीसरा रेडियस बनाएगा, है ना? Either it might come ऐसे, ठीक है? It might start
एंड द रेडियस और मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम रेडियस है, ये कहाँ की तरफ जा रहा है, इट माइट स्टार्ट फ्रॉम ए मिनिमम रेडियस, इट माइट गो टू maximum radius, or it might come from maximum radius, it might come to minimum radius, or it might go from maximum to maximum. So these are all possibilities. Particle ऐसे चल रहा है ना, it's going to infinity, or it is coming to infinity, and what is that which stops it from coalescing? center पे क्यों नहीं जा रहा है? We are studying motion in a central field, ठीक है? Particle either comes from infinity, चलते, but again, or it will go back to infinity. There are two conditions. If the outer radiuses are max and the inner radiuses are, so in the first condition, if r is greater than r min, so the motion comes from, so isko filhal aap yaad rakho, motion comes from, particles comes from, motion is infinite and particle comes and returns to infinity, ठीक है? This much, this is fine. Now the condition हमारे पास है, what is the condition? Condition हमारे पास, तो normally we don't observe motions like this. We observe motions जैसे particles are coming, where जो bounded motion है, जैसे earth moon motion है, earth sun motion है ना, it's a sort of bounded motion, ठीक है? So that is a typical case of a motion, of general motions, ठीक है? Where the radius may be fluctuating from maximum to minimum. A particular case where the potential is bounded, ठीक है? So वो इसी का केस बनता है, ठीक है? And in that case, the case is that जो delta phi है, delta phi, basically ये phi जो हमारा था ना, इंटीग्रेशन था phi 1 to phi 2, जिसको हम डेल्टा फाई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. डेल्टा फाई की जो इंटीग्रेशन है, इफ इट गोज, यहाँ पर एक ही है ना, बट इफ यू गो, इट गोज फ्रॉम ट्वाइस, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो दो सेमी सर्कल्स इसने किया, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस. द इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम आर मैक्स टू आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम. कोई भी पार्टिकल की ट्रेवर्सिंग जर्नी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, द इक्वेशन विल कम आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है? नाउ दिस इज द जनरल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन दैट इट विल बी अ बाउंडेड मोशन? इट विल बी अ bounded, ये तो होगी जनरल मोशन of all sorts of potentials which fluctuates between minimum to maximum radii, minimum to maximum radii. And what is the condition that it will remain bounded? So bounded condition में एक limited condition है. The condition will come out to be if delta phi is defined as twice pi m and n, where m and n are integers. M and n are integers. M हो गई M are the complete revolutions and N are periods. So the condition of bounded motion is if delta phi जो हमारे पास जो एंगल है, it will come in the ratio of M and N, है ना? M is the number of revolutions, कितने लेगा? 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, है ना यहाँ पर. And time period of the revolution divided by they both should come in terms of integers. They should not come as half integers या कुछ. If they are coming in the integral condition आएगी, तभी हमारे पास ये bounded motion आएगी. The bounded motion which we are normally जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो coulombic potential है या हमारा earth moon system है, ठीक है? The other motions, you can have all sorts of motions otherwise, where these two radii might fluctuate. For example, कोई भी particle आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना? It will, आप देखो ये डायनेमिकल चीज है ना, कम होते 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 जा रहा है. तो where it will, its radius will be minimum and where its radius will be maximum from some angular disk, from some
एंड जिसकी बाउंड्री हम फिक्स करेंगे. सो इधर इट विल द मोशन विल कम फ्रॉम इनफाइनाइट एंड इट विल गो बैक, और इट विल कम फ्रॉम इनफाइनाइट एंड इट विल कम बैक. ठीक है. बट व्हाट आर द केसेस वेयर इट्स नॉट गोइंग टू fluctuate, it's going to remain bounded. So that's this condition. That is this condition. अब जो ये हमारी मोशंस है ना, we are going to study in your next class. The motion is in terms of 1 by r square potential जहाँ होगा. ठीक है. 1 by r square potential और 1 by r potential. 1 by r square potential जो Kepler problem हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. That follows this thing which we'll study in detail in next class. ठीक है. So that corresponds to this condition of this integral motion, bounded motion. ठीक है. This is the thing. So if it's not a Kepler problem or it's the oscillation problem, this is also going to study in subsequent chapters in this book. ठीक है. So these two problems constitute for us as if we are studying motion in a bounded system. Okay, so that's the point. अब ये है कि the argument जो हमारे पास argument ये है normally जो आप पढ़ते आए हैं in earlier classes. If the electron moves around the nucleus, ये फिर center पे क्यों नहीं जाता है? If the sun, moon and earth तो अगर कंटिन्यूसली जाएगा बाउंड, सो ये इस सेंटर पे व्हाई डजंट इट दिस, उसका एक्सप्लेनेशन पार्टली कैन बी हैड फ्रॉम दिस थिंग. व्हाई शुड, सो द एक्सप्लेनेशन इज लाइक दिस. And you have to remember, for phi is equal to 0, there is no change. There is no change. ये है ना, phi is, अगर phi is 0, it's only change in phi which matters, है ना. Phi means angle यहाँ पर. ये change in phi change fluctuate करता है. It will either go from minimum to maximum or it will go from maximum to minimum. दो ही conditions हो सकती हैं. For phi is equal to 0, the value of it will not be, it will be as if it's at rest. जिस तरह कहते हैं ना, body at rest, dr by dt is equal to 0, and phi not changing means d phi by dt is constant. ठीक है. So either the phi will fluctuate from minimum to maximum or it will come from maximum to minimum. That's the point which we are going to see. And there can be हाँ, अब हमारे पास जो ये है कि the thing is that so the presence of centrifugal energy. So we said कि जो ये हमारे पास ये था ना second term, we defined it in terms of effective potential. ठीक है. This term plus, so this is a effective potential. So this is kinetic energy. ठीक है. So the kinetic, this is the total energy of the system. The total energy of the system of the particle which is in that central field. उसका अपना एक kinetic energy होगी, radial velocity normally 0 होती है. बट इसका इफेक्टिव पोटेंशियल ये होगा. पोटेंशियल एनर्जी जो सेकेंड टर्म हमने कहा था, इट्स सॉर्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अगर हम ये लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर m नॉट बिकम टू 0 becomes infinite as 1 by r square when r tends to, ये r जब 0 होगा ना, it will tend to infinite. It will tend to, if we go r goes to 0, but this means this term will tend to infinite, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. So this argument हम कह सकते हैं कि renders it impossible
for particle to reach to the center of the field, to reach to center of field. So if you want to explain it mathematically, अगर आप इसको लेंगे, the first term को आप ऐसे लेंगे, 1/2 mr dot square, ये mr dot square है ना e, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, e माइनस आएगा, it will come out to be e minus ur minus m square by 2mr square should be greater than 0. Why it should be greater than 0 है ना? Normally हम क्या लेते हैं? Kinetic energy is this potential energy less than kinetic energy, such that sum of kinetic अगर minus potential energy कुछ आता है, total 0 नहीं, take it that way, start Lagrangian that way. तो अगर हम इसको ऐसे कहेंगे, so from this आप इससे आप देखो argumentation क्या है? Argumentation है, you can write this, ये है ना r square, अगर इसको multiplying both sides में r square ये आएगा, ये r square आएगा, so it will be this r square u or minus m square by 2m. And again plus r square e is greater than 0. Or we can write इसको आप माइनस प्लस कीजिए, you can write r square u, इसको आप r square u plus m square by 2m is less than er, so you can from this it follows the condition for this potential, this equation and this effective potential, इसकी condition हमारे पास ये आ रही है, ठीक है? This plus this is less than the total energy. So from this, what does it mean? Or should take only value, or will take और का वैल्यू 0 लेगा, शाबाश. If u, जो u है ना हमारे पास, और will take value 0 only if u जो हमारे पास ये है, it will come out to be infinity. It will come out to be or I can say it this way. R square u or tends to 0 is less than m square by 2m. So r square तभी ये infinity जाएगा, either m should be proportional to 1 by r to the power n, or n should be greater than 2. N should be greater than 2. So from this is a convoluted argument, ठीक है? ये थोड़ा सा इसमें he has tried to explain algebraically कि if we try to you need bit of, इसको एक दो बार पढ़ो आप, ठीक है? Then you can settle it down. The point to emphasize is that for the condition that if the particle should not coalesce to 0, coalesce to its center, the particle in a centrally moving field है ना, why doesn't it stop at center? कौन चीज उसको सेंटर से रुका रही है, ठीक है? This is our question. उसका आर्ग्यूमेंट का आंसर ये है, if you take a particular condition, put these three terms of total energy of this system which is moving in a central potential, this is centripetal force,
दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज। तो अब इसका फॉर्म अगर हम इसको ऐसे लेंगे एंड द टोटल एनर्जी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और एंड फर्दर अगर हम इसको लेंगे, इसका रेशियो ऐसे लेंगे, दिस मीन्स दैट दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस, बट इट कैन नॉट बी द कंडीशन, ये है ना जिस तरह आप करते हैं ना प्रूव बाय कंट्रडिक्शन, सो इट कैन नॉट बी, इट कैन ओनली बी द केस व्हेन द वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 2 फॉर द n ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मीन्स और स्क्वायर पोटेंशियल है ना, कमरा कूलम्बिक पोटेंशियल है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसमें स्टेबिलिटी, तो ओनली इन केस ऑफ n ग्रेटर देन 2 दिस आर्गुमेंटेशन होल्ड्स, ठीक है। सो इट विल नॉट यू सेटल डाउन, यू जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट एट योर प्लेस। अब इसी तरह what we have seen today, because the examples of this motion, the bounded motion, we are going to see in the next class, Kepler form. Kepler form की potential है ना 1 by r square, और when we go to oscillations वहाँ potential है 1 by r, ठीक है। Only in these two cases we have bounded motion. We have bounded motion means क्या, एक जगह होती है, एंड इट्स ऑल्सो रेयरेस्ट ऑफ द केसेस बाउंडेड में भी एक जगह बाउंडेड होगी। जैसे इधर नॉर्मली मोशन ऐसी होती है ना, ऐसे इट मे कम एंड इट मे गो टू इंफिनिटी, और इट मे कम फ्रॉम इन्फिनिटी ऐसे आएगी सेंटर पे और अगेन गो बैक। इट्स ओनली स्पेसिफिक केसेस वेयर इट्स बाउंडेड, ठीक है। एंड दैट इज दिस कंडीशन, जो फाई की कंडीशन हमारे पास थी, मैंने शायद बताया वो, हाँ ये कंडीशन थी ना हमारे पास, वी हैड अ कंडीशन डेल्टा फाई की कंडीशन हमारे पास थी, इट केम आउट टू बी, हाँ डेल्टा फाई वाज बेसिकली mn by this 2 pi m by n, where m and n are integers, m is the number of revolution and n is the time period. If इनका रेशियो अगर होगा in terms of integers, then only the case will be bounded, and that too case for the potentials of the form 1 by r square, ठीक है। and there is a particular theorem in classical mechanics which study मैंने कहा था, if you want to go to detail, Bertrand's theorem है, the description is in Goldstein, you can look to that thing. अब इसी में for example which I'll stop after that, there's a problem given by the book, ये कह रहा है कि इंटीग्रेट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम। कोई भी spherical motion, so once we integrate means what, once we differentiate it means rate of change, once we integrate it means rate of change is given, you have to get to the original function where it started, ठीक है, whether it started from rest or whether it was already moving, जो भी। differentiate means change देखनी है आपको, integration means change is given, you have to come to where the change जहां से आप start किया होगा, state of the equation, ठीक है। तो अब यही है कि जो इन क्लासिकल मैकेनिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट लाइक इन योर अर्लियर क्लासेस, आपके पास क्या था, कोई भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है ना, गिवन इनिशियल कंडीशंस, आप फोर्स दे देते, यू सर 5 मिनट के बाद कहाँ पार्टिकल था, ठीक है। यू डिटरमाइन समथिंग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ वी आर यूजिंग द वर्ड्स ऑफ लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, आगे भी देखेंगे। तो लैग्रांजियन ऑफ ए सिस्टम क्या है, लैग्रांजियन कैसे सेट करना है। अब कोई भी पेंडुलम है, अब इट्स नॉट ओनली सिंपल केस, पेंडुलम का लैग्रांजियन होगा, एक पार्टिकल का लैग्रांजियन होगा, 2 पार्टिकल, n पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल, तो वही है मोशन ऑफ सेंटर। सो 2 पार्टिकल्स बाउंडेड सिस्टम है, 2 पार्टिकल्स है ना सिस्टम, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मॉड, ये भी सॉर्ट ऑफ इसका लैग्रांजियन सेट करो, 3 बॉडी प्रॉब्लम का लैग्रांजियन सेट करो, ठीक है। स्फेरिकल पेंडुलम का, अब ये हमारे पास इंटीग्रेट द मोशन ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम,
ठीक है, स्फेरिकल पेंडुलम आपके पास होता है ना बड़ा वाला, पॉइंट एक हो गया पॉइंट ऑसिलेशंस। सो वी डिड व्हाट प्रीवियसली टाइम पीरियड निकालो एक पेंडुलम का। ये इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ प्रॉब्लम एक की थी, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वहाँ हमारे पास जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल फार्मूला थी T is equal to 2 pi L by G, it came a particular case of while we were solving the Jacobi integral, ठीक है, उसमें जो हायर ऑर्डर टर्म, सो वी केम टू नो दैट वाज ए, जो हमारे पास वो T is equal to 2 pi L by G, that was an approximate formula, it had some higher order terms। वो कैसे हमको पता चला? once we set the Lagrangian of that system with regard to those parameters, ठीक है। सो जो आपकी अर्लियर क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स थी, दैट वाज कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड समझते हो, दैट वाज अप्रोक्सीमेट। सो वी कुड से जो वो वाली फॉर्मूला है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रल, दैट केम आउट टू बी लिमिटिंग केस। इन द सेम वे अगर आप स्फेरिकल पेंडुलम लेंगे, इसका लैग्रांजियन आप सेट करोगी, फॉर एग्जांपल इसका लैग्रांजियन आप सेट करोगी, अब इसमें है ना पैरामीटर्स, इफ द इट इज मूविंग, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका एंगल होगा ना थीटा, इट्स नॉट मूविंग रेडियली, इट्स मूविंग, सो इफ इट्स मूविंग इन दिस थिंग, इसका लैग्रांज होगा ऐसे in terms of spherical coordinate system, so it will be like this। spherical ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो अब इसका अगर ऐसे है, अगेन लैग्रांजियन में ओनली यू हैव टू सी व्हाट आर द साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। जब भी आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करोगे, कोई चीज जो रिपीट होती है और कांस्टेंट होती है, वी कैन इग्नोर दोज कोऑर्डिनेट्स, उसी को कहते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स या स्क्लेरोनोमिक, होलोनोमिक। अब वही है कि इट्स आर्ट, जरा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आर्ट। हाउ वी कैन, जिस तरह लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स में भी देयर में बी सिमेट्री एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल spherical pendulum, हमने deliberately we took spherical coordinates, we do not take Cartesian coordinates। तो उससे क्या फायदा आएगा? हमारे पास कुछ coordinates they can be cyclic or they can be ignorable, ठीक है, and we can reduce those very equations। For example, we'll say z component of angular momentum will come out to be constant। तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम को mz विल राइट इट एज दिस। अगेन जो हमारे पास ये आएगा, देखिए इसके बदले आप लिखेंगे ये mz। सो अब इट विल जॉब द वे वी डिड, यहाँ पर हमने क्या ना dr by dt का टाइम निकाला, यहाँ भी है d थीटा बाई dt है ना, ये थीटा डॉट स्क्वायर है, बेसिकली ये है d थीटा बाई, सो देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन d थीटा बाई, है ना, रेडियल थीटा चेंजेस। अब d थीटा बाई dt को इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ आप, सो इट विल कम आउट टू बी एंड देन इंटीग्रेटेड d थीटा बाई dt आएगा, फिर इसको ऊपर नीचे करो, इट विल बी dt बाई d थीटा, थीटा को एक साइड लाओ, फिर dt को इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन फॉर्म विल बी लाइक दिस। अगेन वी आर गेटिंग ए, सो इट्स यू आर सॉल्विंग ए सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल, बेसिकली ये पेंडुलम आपकी मोशन स्टडी नहीं करते, यू आर स्टडी इसका टाइम कहां से कहां चला है, एज इफ यू आर सॉल्व, इफ यू नो दीज पैरामीटर्स यू आर सॉल्विंग विद इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह हमारे पास ये था ना, दीज आर टर्म्स, ये इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइम है। इसी तरह आप पहले हम t में निकालेंगे, फिर इसी तरह फाई में भी निकाल सकते हैं, एंड फाई का वैल्यू आई जस्ट नॉट डू इट, यू जस्ट आप अपनी जगह करना है। अब इसमें भी अगेन द थिंग विच आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट again we have to solve, ये है ना these two integrals, again
इनको कहते हैं इन लिटरेचर एलिप्टिक इंटीग्रल्स। पिछली बार भी हमने एक एलिप्टिकल इंटीग्रल को सॉल्व किया था, वो एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसको कहते हैं एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड काइंड, ठीक है। एंड देन यू वंस यू सॉल्व इट, जिस तरह इसमें पिछले में हमने क्या निकाला था ना, फर्स्ट टर्म केम आउट टू बी 2 पाई रूट ऑफ L by plus something more. So once we study small oscillations, that's an approximate formula, ठीक है। तो हमारा लिमिटिंग केस था। सो इन द सेम वे जो नॉर्मल स्फेरिकल पेंडुलम के लिए आप क्या निकालोगे, बट वी हैव टू सॉल्व हियर एलिप्टिकल, जब इनको कहते हैं जैकोबी इंटीग्रल्स, एलिप्टिकल इंटीग्रल्स। यू गो टू एनी बुक ऑफ एनालिसिस, सो हाउ टू सॉल्व दीज इंटीग्रल्स। सो इनका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, but we have to solve them in terms of parameters t and phi. T is the time, phi is the angle which is required. इसमें ये है phi ये है ना, ये कैसे मूव कर, so this is the info आप इसकी motion of pendulum कैसे हो सकता, ठीक है। then you can go for real problems also. रियल प्रॉब्लम क्या, मून की प्रॉब्लम, आपकी आंख है ना उसका सॉकेट भी मूव करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है। या नेचर में वाइब्रेट, सो वेयरएवर यू, सो फर्स्ट हमारा काम क्या है, टू मेक द मॉडल, ठीक है। देन यू सेट द लैग्रांजियन सेट करके फिर व्हाट आर द इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। जो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स के बाद हम इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस सिंप्लीफाई होगी, देन वी हैव टू सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ उसका थीटा कैसे होगा, टाइम कैसे होगा। नॉर्मली अगर लीनियर मोशन होता तो वहां पर क्या होता, एक्स होता, यहां 5, ठीक है। चलो ठीक।